Hello guys, let's begin. So I will start from here today. The Regulating Act of 1773 was the first attempt at creating a separate and somewhat independent judicial organ in India under the control of King. Now here the King of England, Kaunsa King, the King of England will be directly controlling upon the activities of the government that will be established for regular governance in India, and it will also directly control the activities of the company which was having the possession of various territories of India at that time. So by this act, not only that a regular government will be established, but also a separate and independent judiciary or as an organ will be set up. Chief Justice and other junior judges were appointed by the King. Section 13 of Regulating Act empowered the Crown to establish by charter a Supreme Court of Jurisdiction at Fort William in Calcutta. Now jurisdiction भी Calcutta की थी because now the court was also Supreme Court. The first Supreme Court of India, always remember, was established in Calcutta at Fort William. Okay, and this was done by section 13 by way of a charter by the King of England at that time. And as it happened, as it is today, Chief Justice was appointed and other junior judges were appointed by the King himself. On 26 March 1774, letters patent was issued to establish the Supreme Court of Judicature. Now what was the name? Supreme Court of Judicature at Fort William in Calcutta. Supreme Court was to consist of a Chief Justice and 3 puisne judges. Puisne means junior judges. So what was the strength of Supreme Court at that time? 1 Chief Justice and 3 junior judges. That is 1 plus 3, where 1 stands for the Chief Justice of the Supreme Court or of India and 3 junior judges. And today the strength is 33 plus 1, that is 33 other judges or junior judges, and 1 is the Chief Justice of India. So today the Supreme Court strength is 34. When it was established, it was 4. Right? So that's how it has traveled from 4 to 34. Now, being barristers of not less than 5 years of standing to be appointed by His Majesty. His Majesty was a ceremonial title which was given to the King. So whenever a person goes to the King, he used to say His Majesty. If you may have seen any historical movie or a serial, you may have observed the British officers, whenever they went to the court of any king or any queen, they used to say His Majesty, Her Majesty. So that was the title by which you have to call the king, right? So now at that time, what was the qualification for the judges to be a Chief Justice or to be other junior judge of Supreme Court? He or she has to be a lawyer. Barrister means lawyer, who has practiced for at least 5 years. At least 5 years means 5 years, and more than 5 years can be done, but not less than that. At least 5, either 5 years or more than 5 years की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप एज अ जज क्वालिफाई कर पाएंगे फॉर सुप्रीम कोर्ट. Sir Elijah Impey, a distinguished English barrister, was appointed as first Chief Justice of Supreme Court of Calcutta, a post he held until 1787. Now you see, in 1774, the court was established, and from that year till 1787, the first Chief Justice of Supreme Court of Calcutta in India was Sir Elijah Impey. Now please underline and please learn. Now this is very important information. Supreme Court was set by letters patent, as it was given over here also. Letters patent. Clause 18 of First Charter ordained that Supreme Court should be a court of equity, there should be equality, and shall and may have the full power and authority to administer justice. Means it has full authority and all the power so that it may deliver proper justice to the people. In a summary manner, as nearly as may be, according to rules and proceedings of
our High Court of Chancery in Great Britain. Now you see again, there were no concrete rule books to be followed or to be practiced as of India. So now they were following the rules or the legislations which were already framed in their own country, that is UK or Great Britain, whatever you may call it. So now whatever decisions you have to give, that need to be based upon the rules or provisions or the precedents which were by the High Court of Chancery of UK. In other words, power to administer justice and equity was also passed on to the Supreme Court and to subsequent charter high courts. The legacy of this practice continues to have influence in India, at least in areas of Hindu law. So what it is saying that power to give justice was given to the Supreme Court, and with equality, which was very important feature of crown courts also, that was in Britain, and this passed on to various high courts and Supreme Courts. From Britain, that principle passed on to the Supreme Court in Calcutta and subsequent high courts. Until now, some of this is practiced in India. Supreme Court under Regulating Act of 1773 was a court of record and had power and authority similar to that of King's Bench in England. Court of record means all the things were done officially in papers, all the proceedings were जैसे papers बनाए जाते हैं, formally official work किया जाता है, वो सब चीज़ें record होती थी, सब चीज़ का एक record maintain होता था data, और उनकी पावर अथॉरिटी वैसे ही होती थी जैसे कि किंग की है इंग्लैंड में, तो उनकी पावर अथॉरिटी कैसी थी इंडिया में, और किंग की ऑब्वियसली इंग्लैंड में थी, उन दोनों का पावर सेम था, और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली किंग, इंग्लैंड का किंग रूल कर रहा था. Supreme Court of Calcutta had jurisdiction over civil, criminal, admiralty and ecclesiastical laws governing affairs of Christian church matters. Now Britishers, they were mostly, all the people belonged to the Christian religion. So Supreme Court of Calcutta क्या क्या मैटर्स पे jurisdiction थी? Civil matters, criminal matters, admiralty means army matters, and the matters which were related to the Christians as a religion. It had the power to issue writs such as mandamus, certiorari, similar to jurisdiction of present-day high courts and Supreme Court. Today, India or Indian courts, whether it is a high court or a Supreme Court, can issue 5 writs. Earlier at that time, the power to issue writs were only 2, means 2 writs can be issued, mandamus and certiorari. बाकी 3 शायद उस समय बनी ही नहीं थी, तो उस समय सिर्फ 2 writs इशू करने की परमिशन थी सुप्रीम कोर्ट को, mandamus और certiorari. टुडे जिस तरीके से वो इशू कर रही जा रही थी वो सेम है, जैसे पहले हो रहा था रिट्स इशूएंस, वैसे ही आज इशू हो रही हैं, लेकिन आज कितनी इशू हो सकती हैं? 5. Now again, it's a homework to find out what 5 writs can be issued. It also had the power of oyer and terminer, that is the power to try offences and imprisonment. So obviously if you are dealing with a matter, if you are hearing a case, so you will see or you will hear both the sides, you will decide, you will interpret that what decision could be the best to deliver in that circumstance or factual cases, whatever they may be, and so you will hear the case. So trial means you will hear the case, you will hear both the sides, and then you will give the allotted or the whatever the correct punishment regarding that offense would be that you have to provide to the people. So you can also send people to jails, that is imprisonment, you can impose a fine, but the agenda was to deal with civil criminal matters so that administration can be efficient and justice could be delivered to the natives. The court also had to frame separate rules of practice and procedure for governing its functioning. Now it was directly under the control of King of England, but also for its own functioning, कि हम कोर्ट कैसे फंक्शन करेगा वो डिसाइड हम खुद कर सकते थे. ठीक है, मतलब कोर्ट खुद ये डिसाइड कर सकता था कि उसे आगे किस तरीके से फंक्शन करने की ज़रूरत है.
Supreme Court had jurisdiction over all British subjects and those residing in Bengal, Bihar, Odisha, and had the power to decide all complaints regarding crime, misdemeanors, or oppressions. अपील्स फ्रॉम दिस कोर्ट वर मेड टू किंग इन काउंसिल इन इंग्लैंड. तो अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाना है, आज तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है. उस समय क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंडिया का था और बनाया इसे ब्रिटिशर्स ने था और उस समय ब्रिटिश की गवर्नमेंट भी थी, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक चीज़ थी, इंग्लैंड जाना, यानी कि किंग एंड काउंसिल इन इंग्लैंड, एक वो कोर्ट था उस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर. लेकिन आज क्योंकि सब चीज़ हमारी ओन है, हमारी खुद की है, इंडिपेंडेंट है, तो आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है. इट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया इन टुडेज डेट. उस समय सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या थी? अपने सारे ब्रिटिश सब्जेक्ट, सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स और सारे जो नेटिव्स हैं विच वर रिसाइडिंग इन दीज 3 एरियाज ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा. एंड रिमेंबर दिस थिंग, जब हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट डे स्टेट्स हों. उस समय का इन स्टेट्स का डिवीज़न और प्रेजेंट डे इन स्टेट्स का डिवीज़न बहुत डिफरेंट है. ना सिर्फ इनका, लेकिन सब स्टेट्स का डिवीज़न बहुत ही डिफरेंट है इन प्रेजेंट डेट एंड दी अर्लियर टाइम्स और व्हेन द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर अस. सो जहाँ पर कोई भी स्टेट का नाम दिया हो, उसका मतलब ये नहीं है वो प्रेजेंट डे एलोकेशन या बाउंड्री के हिसाब से है, वो उस समय के अकॉर्डिंग है. तो उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा जिस पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, उन वो टेरिटरी में जितने लोग रह रहे थे उन पर भी इस सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था. वो सारे मैटर्स डील कर सकता था विच वर रिलेटिंग टू दी ऑफेंसेस, या किसी ने किसी को ऑप्रेस किया, फोर्स किया. सो ऐसे कुछ मैटर्स दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस इफ़ यू आर फोर्सिंग समबडी और प्रेशराइजिंग समबडी. तो ऐसा जो भी मैटर्स होते थे दैट ऑल कैन बी डेल्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, उस पर उसकी जुरिस्डिक्शन थी. बाकी सिविल, क्रिमिनल एंड मिलिट्री जो भी मैटर्स हैं वो तो वो डील कर ही सकते थे. नाउ यू सी देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. यहाँ पर 1773 और 1753 के बाद जो एक चार्टर आया था उसको हम कंपेयर करते हैं, जिसमें 1753 के साथ कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे. उस चार्टर में इतने अच्छे से चीज़ें क्लैरिफाइड नहीं थी. यहाँ पर फॉर्मली एक अलग कोर्ट बना, सुप्रीम कोर्ट बना इंडिया का, जहाँ पर साफ साफ दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़, उसकी पावर्स क्या क्या हैं और वो किस तरीके से रूल कर सकता है, किस पर रूल कर सकता है, सब बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. The Charter of 1774, in pursuance of Regulating Act establishing Supreme Court in Bengal, did not delineate the bounds of its jurisdiction. This omission led to a sharp conflict of opinion about jurisdiction of Supreme Court. Now, the Charter of 1774, which was brought after the Regulating Act of 1773. Now Regulating Act और Charter अलग चीज़ें हैं. Regulating Act था 1773, जिसके बाद आया Charter of 1774. और जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था बंगाल में, कैलकाटा में, विच वॉज इन बंगाल. तो उसमें जुरिस्डिक्शन की लिमिट क्या होगी, दैट वॉज नॉट डिसाइडेड. तो नाउ इफ़ इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट मैंशनड ना, तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, कहाँ लिखा है कि इसकी लिमिट ये है. नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी जुरिस्डिक्शन इतनी है, कोई बोलेगा नहीं इतनी नहीं है, ये एक लिमिट है, कहाँ लिखा है कि ये लिमिटेशन है. तो उसकी लिमिटेशन या बाउंड्रीज क्या होंगी जुरिस्डिक्शन की, दैट वाज नॉट गिवन. तो इससे एक कन्फ्यूजन हुआ, जिससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ अबाउट द ओपिनियन कि इसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी. Not infrequently, Supreme Court, without drawing any light from regulating act, overstepped the limits of its jurisdiction and thus commenced in Bengal an era of confusion described by Macaulay in his essay as a reign of terror. So now what happened? Reign means time period, certain time period. और Macaulay is Lord Macaulay, जिन्होंने IPC लिखा था 1860 में. So यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं ली सुप्रीम कोर्ट ने और अपने जुरिस्डिक्शन के ऊपर गया, ओवरस्टेप किया, उसको एक्सीड किया
और बंगाल में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि ये इसकी पावर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं, ये मेरी पावर है, ये मेरी जुरिस्डिक्शन है। लोग कह रहे हैं दैट इट वाजंट योर जुरिस्डिक्शन एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ओवरस्टेप्ड द लिमिटेशंस एंड देन began an era of confusion, जो कि मैकेले ने कहा कि वो एक reign of terror था। Edmund Burke notes, no rule was laid down either in act or charter by which court was to judge. No description of offenders or species of delinquency was properly ascertained according to the nature of place or prevalent mode of abuse. एडमंड बर्के ने भी बोला कि ऐसा कुछ रूल एक्सप्लिसिटली ना चार्टर एक्ट में ना रेगुलेटिंग एक्ट में दिया था कि कोर्ट की लिमिटेशंस या जुरिस्डिक्शन क्या है। नहीं दिया था कि ऑफेंडर्स कैसे होंगे या किस तरीके से आपको उनके साथ डील करना है। बस लिखा था कि आप इम्प्रिजनमेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। Power and jurisdiction of Supreme Court in matters relating to natives was particularly controversial. मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या होंगी as to deal with the natives. It was given कि उसका jurisdiction over all British subjects है और the people who are residing in these three presidencies of Bengal, Bihar and Odisha. लेकिन बाकी जगह के नेटिव्स पर उसकी क्या पावर्स हैं वो भी एक कन्फ्यूजन का मैटर था, because of which it became a controversy. Act of Settlement of 1781 partly resolved these issues. Its effect was to take away the application of English law to Hindus and Mohammedans in matter of contracts and other matters enumerated in the statutes, and to provide that they were to be governed in these matters by their own laws and usages. So एज वी नो हमारे पास कोई रूल बुक नहीं थी। हम कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वेरियस रिलीजन्स के जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं उनको एज अ रूल फॉलो किया जाता था उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया की एज अ नेशन कोई भी रूल बुक नहीं फ्रेम हुई थी। तो ब्रिटिशर्स ने जो सुप्रीम कोर्ट बना दैट वाज टू बी गवर्नड ऑन द प्रिंसिपल्स और ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोविजंस व्हिच वर गिवन इन द लेजिस्लेशंस दैट वर फ्रेम्ड बाय देयर ओन कंट्री एट दैट टाइम। तो यहाँ पर इस नाउ देयर इज़ अनदर एक्ट विच इज़ एक्ट ऑफ सेटलमेंट। नाम ही दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज और कन्फ्यूजन हुआ, तो उन सब चीज़ को सेटल करने के लिए, दूर करने के लिए एक एक्ट आया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781, विच said that now Hindus will not be governed by the English law. Hindus and Muslims both. Hindus and Muslims will not be governed by the English law. English law को उन पर applicable नहीं किया जाएगा, उन पर force नहीं किया जाएगा, and whatever their own religious laws or statutes or cultures and traditions are, they will be ruled over by those only and not by the English law. ये था Act of Settlement of 1781. Now, defects of regulating Act of 1773, next video.